नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द वर्टाइसेस पी क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर रैशनल पॉइंट्स, which of the following points of triangle PQR is oblique are always a rational points? First is centroid, in center, circumcenter, and orthocenter. Okay, always a rational points. The rational point is a point both of whose coordinates are a rational number. Both of whose coordinates are a rational number. देखो हम इसका देखो. Let the vertices of the triangle PQR be P x1 y1 Q x2 y2 R x3 y3. Rational point is a point x comma y where x y and y are rational number. So PQR are rational points. This means x1, y1, x2, y2, x3, y3 are all rational numbers. Let's analyze option types of point. जैसे पहला पॉइंट क्या है, सेंट्रोइड ए, ऑप्शन सेंट्रोइड है ना. तो सेंट्रोइड जी इक्वल टू क्या, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाई थ्री, y1 plus y2 plus y3 divided by 3. This is centroid. Since x1 x2 are rational number, their sum x1 plus x2 plus x3 is also rational. Divided by 3 is also rational. The result the rational number. है ना? So thus the x coordinate of the centroid is a rational. Similarly, y coordinate is a rational. Therefore, centroid is always a rational point. Therefore, this in center. In center, the coordinate of in center are given by the formula this one. So A, B, C are the length of the side of the opposite to the vertices P, Q, R respectively. A equal to क्यू आर, बी इक्वल टू पी आर और सी इक्वल टू पी आर पी क्यू. ये पॉइंट है, क्यू पॉइंट एक्स टू वाई टू है ना, आर पॉइंट एक्स थ्री वाई थ्री. तो उसके हिसाब से फॉर्मूला मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स थ्री माइनस एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस वाई टू स्क्वायर. पी क्या है, एक्स वन वाई वन, आर क्या है, एक्स टू वाई एक्स थ्री वाई थ्री, मतलब एक्स थ्री माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर. पी क्या है, एक्स वन वाई वन, क्यू क्या है, एक्स टू वाई टू, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस. Since the coordinates are rational, the term xj minus xi square and yj minus yi are rational. Their sum is also rational. Therefore, the square root of a rational number is not necessarily rational. Square root of rational number is not necessarily rational in general. So consider a triangle with a vertices p 0 0 1 0 0 1. There are rational points. So pq equal to square root again, मतलब 1 equal to rational. 1 again rational, root 2 again irrational. So in this case the side length ABC are not all rational. तो x coordinate मतलब ix equal to क्या आ गया, x को ix equal to है ना, रूट थ्री रूट टू इंटू जीरो प्लस वन इंटू वन प्लस वन इंटू जीरो अपॉन रूट थ्री, मतलब इसमें पुट कर दो ये जो इक्वेशन है, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स वन ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज आई एक्स एंड दिस इज आई वाई, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री इक्वल टू ए प्लस. देखो ये दिस इज द ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, ए प्लस बी प्लस सी. ये रैशनल है क्या, नहीं, इरेशनल है. सो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वन माइनस रूट टू बाई टू. सो दिस इज अ इरेशनल नंबर, देयरफॉर द इन सेंटर इज ऑलवेज अ रैशनल पॉइंट इज फॉल्स, मतलब ये फॉल्स होगा. इन सेंटर रैशनल पॉइंट नहीं रहेगा. सरकम सेंटर लिया सपोज, सरकम सेंटर ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टाइसेस पी क्यू आर. दिस मीन्स ओ पी स्क्वेयर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वेयर एंड ओ क्यू स्क्वेयर इक्वल टू ओ आर स्क्वेयर. ओ पी स्क्वेयर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वेयर लिया, तो ओ पी स्क्वेयर का देखो ये फॉर्मूला एंड ओ क्यू स्क्वेयर का ये. ओ के पॉइंट कौन से, एक्स वाई, पी के पॉइंट एक्स वन वाई वन और क्यू के पॉइंट एक्स टू वाई टू. इसको सिंप्लीफाई किया पूरा, सो रीअरेंज द टर्म्स हियर वी गेट द लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई. तो ये सिंप्लीफिकेशन है. अभी इसमें क्या है, सिंस एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू आर रैशनल है ना, ये पूरा सिंप्लीफाई करो, कैलकुलेशन पार्ट है. x1 y1 x2 y2 are rational. All the coefficient of x y and the constant terms are rational. So let this equation 1 a1x plus b1y equal to c1. सेकंड जो लेंगे, अब यहाँ पे ओ पी स्क्वेयर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वेयर लिया ना, उसके हिसाब से नहीं क्या, ये पॉइंट कोएफिशिएंट लेट द इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 से लेंगे. ओ क्यू स्क्वेयर इक्वल टू ओ आर स्क्वेयर लेंगे, तो इसका इक्वेशन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू. The circumcenter is the unique solution to this system of two linear equation with a rational coefficient. A system of linear equation with a rational coefficient always has a rational solution, unless the lines are parallel or coincident, which implies the degenerate triangle or infinitely many solutions, neither of which happens for a unique circumcenter of the non-degenerate triangle. Therefore, circumcenter is always a rational point. तब सरकम सेंटर ऑलवेज अ रैशनल पॉइंट हो सकता है इन जनरल इसके हिसाब से, मतलब जितना दिए, बट परफेक्शन के हिसाब से
नहीं, ओके, जैसे सर्कम सेंटर, जैसे ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इज an intersection of the altitude of the triangle. Altitude of the line segment from the vertex perpendicular to the opposite side. Let's the consider altitude from P to QR. The side of the slope of the side QR equal to एम क्यू आर कैसे वाई थ्री माइनस वाई टू अपन एक्स थ्री माइनस एक्स टू, क्योंकि आर पॉइंट क्या है एक्स टू वाई टू, और क्यू पॉइंट है एक्स थ्री वाई थ्री, सॉरी क्यू पॉइंट है एक्स टू वाई टू और आर पॉइंट है एक्स थ्री वाई थ्री, वाई टू वाई थ्री एक्स टू आर रैशनल, सो एम क्यू आर इज अ रैशनल और अनडिफाइंड इफ एक्स थ्री इक्वल टू एक्स टू और वाई थ्री इक्वल टू वाई टू अनडिफाइंड, मतलब द स्लोप of the altitude from P, m altitude P equal to minus 1 upon mqr. So mqr is not 0 or undefined. This means m altitude P है ना, altitude from P है ना, is also rational. So altitude passes through P x1 y1 which is the rational point. The equation of altitude is y minus y1 equal to m altitude from P उस लाइन का स्लोप x minus x1 since y1 x1 and m altitude from P are rational. This is a linear equation with a rational coefficients. For example, m altitude from P is a rational. So rational into x plus rational into y equal to rational. So if m altitude from P is undefined, so QR is a horizontal. So altitude is x equal to x1 is a rational. Altitude from P is a 0. QR is a vertical. So altitude is y equal to y1 is a rational. In all cases, the equation of altitude is a linear equation with a rational coefficient. मतलब orthocenter is the intersection of two such an altitude. Just like the circumcenter, the in-center of two lines defined by linear equation with a rational coefficient will yields rational coordinates for the intersection point. अभी अल्टरनेटिवली भी सॉल्व किया है, therefore orthocenter is a always a rational point. Okay, so based on the analysis, centroid always rational, in center is not always rational, circumcenter is always rational, and orthocenter is always rational. In my concept point of view, A is a perfect option. अगर सिंगल चॉइस में अगर पूछा है तो A को टिक करेंगे, ओनली A को, ऑलवेज अ रैशनल सेंट्रोइड। बी तो नॉट ऑलवेज रैशनल है, सी ऑलवेज रैशनल में इसमें ना सम कंडीशन, जैसे सी के हिसाब से जो कंडीशन है, जो सी पॉइंट सर्कम सेंटर में जो लिया ना अपने, ये जो टू लाइन है ना, यूनिक सोल्यूशन है ना, कभी कभी केस में हो सकता है दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई सी ऑप्शन मेरे इस कंसेप्ट के हिसाब से नहीं। ऑर्थो सेंटर जैसे यहाँ पे अनडिफाइंड बोला है, कहाँ पे, जैसे इज अनडिफाइंड फॉर वर्टिकल लाइन्स है ना, दैट्स वाई द परफेक्ट ऑप्शन फॉर irrational point A is a single choice में पूछा तो A को टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।